हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विदेश वाला। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विट्जरलैंड की, और आई शुड से अ फुल गाइड ऑफ स्टडी इन स्विट्जरलैंड। सो व्हाट इज स्विट्जरलैंड? इट्स अ वेरी हाईली अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, नॉट जस्ट फॉर टूरिस्ट बट फॉर एनीवन हु इज प्लानिंग टू मूव देयर। इट हैज़ great experience, great food, great people, so why not just travel, but you can also study there. So in this video हम बात करेंगे why you should study in Switzerland and all this country has to offer regarding education, so stay tuned. हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, येस, स्विट्जरलैंड बहुत हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हैविंग टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़। सो इनकी टोटल यूनिवर्सिटीज़ में दे हैव 12 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, एंड इवन इनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में से टॉप यूएस रैंकिंग में भी आती है। यू कैन सी इट ऑन स्क्रीन। द ETH ज्यूरिच यूनिवर्सिटी 7th रैंकिंग में आती है। यू कैन सी द बोर्ड। Another thing Switzerland has to offer is 95% visa ratio. Yes, आपने सही सुना, यहाँ का visa ratio is 95%, which is a great thing and you can get your visa very easily. So next thing, अगर अपन फीस की बात कर लेते हैं तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में it's around 500 CHF to 2000 CHF per semester. So around average 1000 to 1500 आपकी एक साल की फीस हो जाती है when it comes to public universities. I'm sorry. अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है दैट्स जस्ट वे टू मच. इट्स लाइक 9500 to 10,000 पर सेमेस्टर ओनली. तो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द फीस ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटी एज वेल एज प्राइवेट यूनिवर्सिटी. Now we can talk about the duration of bachelor's and master's degree. Bachelor's की it's like 3 years and master's की it's like 1 to 2 years only. अगर अपन intake की बात करें तो we have September, April and January intake, जिसमें से April intake के admission चालू हो जाएंगे January and February में, and September intake के जून जुलाई में admission process start हो जाती है. Now if we talk about the language which are spoken here, it's Germany, Italian, French and Romance, and these are the 4 main languages. And इसके अलावा English is also spoken here. So अगर आपको English आती है तो it's completely fine because it's used. Let's get into the part-time opportunities Switzerland has to offer. When you're studying in the university, you have to work 15 hours per week, and when you're on your holidays, you have to work 40 hours per week. So अब salary कितनी मिलती है? You can get 25 CHF per hour. तो around a week, it's about 400 CHF. And if we calculate it in rupees, it's like 30,000 to 40,000 you can earn in just a week. And I know students इससे ज़्यादा ही कमाते हैं, तो approximately एक महीने में part time करके students can earn around 2 lakh. And that's huge. Also, if you talk about high salaries, yeah, इससे भी high salaries, it's like 5,000 CHF per month you can also get. Besides that, they also give you after your studies 6 months job search visa. मतलब आपकी studies complete होने के बाद आपको search of like job visa, work visa मिलता है, तो आप 6 months तक job कर सकते हो, search कर सकते हो after your studies. Also, if you talk about the unemployment rate, it's as low as 5%. Yes, यहाँ का unemployment rate बहुत कम है. This proves यहाँ पे बहुत लोग employed हैं and have great opportunities to work here. Now let's talk about some of the major requirements of the universities that you can check on screen. They require minimum 65% in your class 12th. Also आपको knowledge होनी चाहिए about the language of instruction of the university or the place. Also IELTS में 6 bands is required and TOEFL में 90 or more. SOP and LOR is also required as well as a passport. Wait guys, before moving forward, I have a great news to share with you all. We are conducting a Malta study webinar on 16th of April 2024 for free. Yes, you heard it right, it's for free. So if you're looking yourself in the future studying abroad in Malta, you should definitely enroll for this webinar and check it out on 16th of April 2024, which starts on 11 AM and ends on 6 PM. So what are you waiting for? Register yourself now by calling on the number below present on the screen. There is one more catch. I told you कि fees of public university and private university में बहुत difference है. Private university is very expensive, so people who can afford private university they can easily get into private university. But public universities काफ़ी inexpensive है, तो उतना ही tough है in universities में admission लेना. बाकी exams you should be really good in academics, then only you can take in public universities. But अगर आपको public universities मिल गई तो that's a great thing for you. Let's get into living cost of Switzerland. So यहाँ पर it's around 1300 CHF to 1700 CHF, which is 1.2 lakhs to 1.5 lakhs per month. So that's very expensive. So no wonder they provide so much salary, because you have to expend
too much, and one CHF is around 93 rupees. Another thing, how to find job opportunities Switzerland. I would like to share some of the portals. You can check on screen for that, and you can go to these websites and find different sectors and search for your appropriate job. So now let's talk about the application process and how this works. Firstly, आपको अपनी यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम चूज करना पड़ेगा जो भी आपको परस्यू करना है. देन यू हैव टू एनरोल इन द वेबसाइट. यू हैव टू गो टू द वेबसाइट एंड अप्लाई, एंड उसके लिए आपको सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे. यू कैन चेक द स्क्रीन फॉर दैट. You need all of these documents. Then you have to pay the application fees, which is around 100 to 250 euros, and after that आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा, एंड उस कंडीशनल ऑफर लेटर के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फीस एंड यूनिवर्सिटी में जो वो फीस आपको बोलेंगे वो आपको देनी पड़ेगी. देन द कंडीशनल ऑफर लेटर्स बिकम अनकंडीशनल ऑफर लेटर. देन यू हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स इन द स्विस एम्बेसी इन दिल्ली फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन. फिर आपका एक इंटरव्यू शेड्यूल होता है. आफ्टर इंटरव्यू आपकी जो वो आपको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, एंड देन यू कैन गेट द वीज़ा एंड गो टू स्विट्जरलैंड. So now let's talk about the application process. So अब ये कैसे होती है. Firstly you need to choose the university as well as the course you want to pursue. उसके बाद आपको ऑनलाइन वेबसाइट में जाके फॉर्म फिल करना पड़ता है. उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी भरनी पड़ती है. एप्लीकेशन फ़ी के बाद आपको एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलता है. देन यू हैव टू पे द रजिस्ट्रेशन फीस एंड द एनरोलमेंट फीस जो भी रिक्वायरमेंट रहती है. देन यू गेट द एक्सेप्टेंस लेटर, एंड उसके बाद ही आपका एक इंटरव्यू स्केड्यूल होता है फॉर वीज़ा, एंड यू रिक्वायर ऑल द documents and visa process तब चालू होती है, and so on. You can apply for the visa, then get the visa and go to your dream place. Now let's talk about the visa documents that you require. You can check the screen for that. You need letter of acceptance, passport, payment of tuition fee, proof, photos, health insurance, CV, letter of motivation, and so on. Another requirement of visa is like you have to show 3 to 6 months of the bank statement of around 21,000 CHF and also 2 years of ITR. Lastly, I would like to conclude with by telling you about scholarships. So yes, यहाँ पर scholarship provide होती है by government and as well as by university. It all depends, but you can check the screen for that. So yeah, that is all the crisp information we wanted to share about this country, about studying in Switzerland. So I personally suggest you should definitely go for Switzerland if you're even thinking about it. So yeah, for any other query you can call us the number below and read the description box, and thank you for watching.